Hey everyone, welcome to the season one and episode second of Life at Work. I'm your host Devagya, and today with me is a very special guest, Mr. Darsh. So, we'll have a quick round of introduction with Darsh. So, Darsh, can you give me an introduction and Hey, t- hi everybody. Yeah. tell us about from where did you do your graduation and what was the field of study and which year did you graduate and what was the first job you started working with? Okay. So, hey, hi everyone. My full name is Darshman Singh Kalra. I did my undergrad from Christ University. Did my schooling from St. George's College, Missouri. So, Dev and I have been very good friends since my school days. So that is how I know Devagya. And post my undergraduation. From Christ University, I started working as an associate product manager. Yeah, so that's a brief introduction about me. So when did you start working as a associate product manager? Okay, so right after my undergrad, I was really confused as to how do what field do I select in particular? Uh, and then, a very dear colleague of mine, I did an internship with him way back in 2022, I guess. That's a mandatory 45-day internship, Devagay, as you know, Yes. that, in Christ University you have to do, right? So this guy suggested me that I should probably go for product management as I'd get an exposure of everything in the corporate journey. So a product manager basically handles from finance to tech to operations to everything that you can think of, right? So he told me to check for product management jobs and I apply for them constantly. So I took his advice seriously, and I started to apply for every internship or every job that I could find that had the name product in itself. So I landed up this internship in Gurgaon itself. It was a 6 month internship, right? I got to know from the very basics of tech to how a product manager operates. So got to know every single thing, and then after this internship, I also got a PPO and got placed in the same company. ओके सो इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर ओवरव्यू देखें तो एक नॉर्मल डे हाउ वुड इट लुक एंड किसी को समझाना हो लेमन्स टर्म में कि कोई अगर पास आउट है कॉलेज से या फिर अभी ट्वेल्थ में है तो इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहे तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस फील्ड? Okay, so बेसिकली अगर मेरे को किसी को एक लेमैन टर्म्स में अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, राइट? सो योर डे विल स्टार्ट लाइक चेकिंग ऑल योर emails, right? And then you have a daily stand-up call, right? So stand-up call is something that we follow in agile methodology, right? Wherein you keep on building upon you that you've already built, right? So you keep on making this feature better. So this is one methodology that is followed in today's product managers, right? And you would have your daily stand-up call with your developers, and you would take an update on them with them as to the requirement that you had written or you had given them, right? Where are they on that particular requirement, right? uh, and possibly you could also discuss the blockers that they are facing, right? It could be any technical blockers that only a product manager can solve, or any bugs that the developers are encountering in their code. And a product manager could suggest them how do we solve them. So this is what you discuss in a stand-up call with the developers, right? Then your day proceeds with uh, you know
doing some meetings with your business stakeholders, like your sales department, with your marketing department, right, with your finance department, right, and take their feedback as to how we, what features they would require, or what what do they require to work more efficiently, or uh, what else they want us to do that they can help them grow the company, right? So, for example, I used to have these constant meetings with my performance marketers, right, wherein we used to discuss how can we optimize our campaigns on Meta and Google, and what more features can we add to our backlog that help the company to optimize their campaigns, and they further optimize तो their ROAS. ROAS is basically a uh, uh, return on ad sales. ओके, सो एक थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इस चीज को, ठीक है? हाँ, तो प्रोडक्ट, ये फिजिकल प्रोडक्ट आते हैं कि कुछ वर्चुअल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं? यार, अब आज की अगर मैं आज के टर्म्स में बात करूं तो प्रोडक्ट मैनेजर्स बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स जिसमें मैं था, राइट, एंड एक प्रोडक्ट मैनेजर्स जो दूसरे जो होते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है, राइट। एंड देन जो फिजिकल प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली P&L मैनेज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सो फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करा है, राइट, अपने प्लेटफॉर्म पर, राइट। उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उस पर क्या डिस्काउंट्स लगने चाहिए, राइट, एंड उसका पूरा A to Z P&L उसको मैनेज करना पड़ता है। देर ऑल्सो कॉल्ड कैटेगरी मैनेजर्स इन पर्टिकुलर, राइट। ओके, सो तो जैसे या कोई रिटेल स्टोर है, अगर वो अपना लिस्टिंग कर रहा है फेस्टिव सीजन तक दिवाली के लिए, तो उसको पूरा कैंपेन बनाएगा वो एक कि उस पे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए, कब प्राइसेस हाई और लो करने हैं। तो ये कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल उस चीज का, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट मैनेजर फिजिकल का प्रोडक्ट मैनेजमेंट एग्जांपल। का। यस, यस, और यस, यस। टेक्निकल में क्या आएगा इसका कि मतलब वेबसाइट रिलेटेड होता है वर्क, कैसा होता है टेक्निकल में? वेबसाइट प्लस पूरा, सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच ऑफ योर टेक्नोलॉजी, राइट। सो कोई भी अगर प्रोडक्ट मैनेजर है तो उसको बेसिकली थोड़ा बहुत टेक का आइडिया होना चाहिए, कोडिंग वगैरह चाहिए राइट। होता है इसमें? एंड आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का सेंस होना चाहिए, बट अगर कोई कहे कि पूरा कोडिंग का आइडिया होना चाहिए, नहीं, दैट्स टोटली रॉन्ग। यहाँ पे हाँ, थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए कि आपका कोड कैसे काम कर रहा है, राइट। सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि यू नो बिजनेस को अपलिफ्ट करना, राइट। अब बिजनेस को अपलिफ्ट कैसे करोगे, नए बिजनेस नए, या मतलब तो कि आप वेबसाइट को अपलिफ्ट करना चाहते हो कि ओवरऑल बिजनेस को अपलिफ्ट करना चाहते बिजनेस बिजनेस एज इन धंधा, तो एज इन हो? एक रेवेन्यू, एक सेल्स और वो सब। एक कुछ डेमो किसी बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी बिजनेस, जैसे ठीक है, ब्लिंकिट, जेप्टो, amazon, कुछ भी। ओके। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सो हम क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट मैनेजर्स एक फनल बना लेते हैं, राइट। सो फनल में हम देखते हैं आपकी वेबसाइट पर कितने लोग गए, फिर वो कितने लोगों ने उस पर ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करा, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पेजेस पर गए, फिर कितने लोग कार्ट पर गए, फिर कितने लोगों ने फाइनली परचेज करा, राइट। इसके बीच में ओके। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं आपको एक ब्रॉड फनल बता रहा हूँ, राइट। सो आपने नोटिस करा कि आपका जो कार्ट वाला आपका जो जब लोग कार्ट पर जा रहे हैं वहां पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, ओके। राइट। तो वहां पे आपने नोटिस करा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्ट पर प्रोडक्ट तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करके, बट देन कार्ट पर जाने के बाद वो ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। तो इसको अब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो एक प्रोडक्ट मैनेजर को सॉल्व करना है, राइट। सो हियर बेसिकली कम्स कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, कितनी अच्छी है, राइट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट मैनेजर टू टेक अ डेटा बैक डिसीजन, राइट। बट देन आप जब आप देखते हो कि आपकी कार्ट पर कुछ बहुत ज्यादा ड्रॉपेज आ रहा है, राइट, तो आप कुछ ऑटोमेटिकली सेंस कर सकते हो, राइट, कि मान लो हो सकता है जो डिलीवरी टाइम है
जो यूजर को वो बहुत ज्यादा दिख रहा हो, राइट, जिसकी वजह से वो कोई और प्लेटफॉर्म से परचेज करे इंस्टेड ऑफ योर प्लेटफॉर्म, राइट। हम्म। या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे और प्राइसेस ऐड कर दिए हो, जो डिलीवरी प्राइसेस जो आपको कार्ट पर दिखते हैं, राइट, वो वो दे ऐड एज अ शॉकर while the user comes to your cart, right? तो वहां से यूजर ड्रॉप कर रहा है, राइट। ऑफ कोर्स देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल। फॉर एग्जांपल आपका जो यूजर एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स है, वो कहीं पे ब्रेक कर रहा है, राइट, जिसकी वजह से आगे यूजर्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल तो रीजंस। सबके साथ कोलैबोरेट करना है, हाँ, अगर वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रहे तो इंजीनियर को बोलना है, अगर डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो डिजाइनर को बोलना है, मार्केटिंग में कुछ एग्जैक्टली, प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग वाले को बोलना है। कोऑर्डिनेट करना है, यस। तो सो लोग इन अदर टर्म्स देवज्ञा, a product manager should also be a very good project manager, तो राइट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, जो एक, और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपको नेसेसरी हैं। तो उसमें मतलब टेक्निकल मिक्स भी आ गया, तुम्हारा बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए एक्यूमेन बिजनेस के लिए। तो यस, करेक्ट। मिक्स ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। यस, करेक्ट। और लोगों के साथ कितना फ्रिक्वेंटली वो करना पड़ता है मीटिंग्स वगैरह की पूरा। आई थिंक लॉट ऑफ टीम्स आर इन्वॉल्व, सो कोलैबोरेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रोल। वेरी ट्रू, एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल। सो एज आई मेंशनड, आपका डे स्टार्ट होता है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कि आप अपनी ईमेल्स चेक करते हो, फिर आप अपना डेली स्टैंड अप करते हो विद योर डेवलपर्स, वेर एक मीटिंग होती है आपके और डेवलपर के बीच में, राइट। देन आप अपने आपकी मीटिंग्स अलाइंड होती है, राइट, विद द बिजनेस टीम्स, राइट, सेल्स, न्यू एनपीडी टीम, यू अंडरस्टैंड, न्यू एनपीडी, राइट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि आपकी इनवॉइसिंग में कुछ चेंजेस हो, इनवॉइसिंग का फॉर्मेट हो, या जीएसटी कुछ ऊपर नीचे करना हो, तो यू हैव यू यू हैव टू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि अगर मैंने छोटा सा इधर ट्वीक करा तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पीछे पड़ेगा, राइट। तो यू शुड ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ दैट एज वेल। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोडक्ट मैनेजर करता है, दैट इज द केपीआई ट्रैकिंग। केपीआईज आर बेसिकली योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। एक दो सो की परफॉर्मेंस आपने इंडिकेटर बताओ अपने स्पेसिफिक। सो एक एक मेरे जब मैं एज अ D2C ब्रांड के लिए एज एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर काम करता था, तो मेरे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई थे। फॉर एग्जांपल, एड टू कार्ट कितना हुआ है, राइट। परफॉर्मेंस मार्केटर ने अपना काम कर दिया, उसने कैंपेन चला दिया है, वो आपके लोगों को आपकी वेबसाइट पर ले आया है। बट इट इज अ प्रोडक्ट मैनेजर्स केपीआई, उसका अपना एक केआरए होता है कि आपका केपीआई आज की डेट में क्या है, और आप आपकी ज्वाइनिंग के बाद कितना बढ़ा है वो, ठीक है। ओके। तो एड टू कार्ट इज वन थिंग, देन योर कन्वर्जन रेट इज बेसिकली लोग कितने लोग आए थे आपकी वेबसाइट पर एंड कितने लोगों ने फाइनली परचेज करा है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक कोई सो पर्टिकुलर ऑफ सॉफ्टवेयर कोर्स पे दे, का हाँ, सॉफ्टवेयर पे होगा, मतलब कोई एक सॉरी। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ये सारा केपीआई जहाँ पे देखते हो कि एक्सेल का काफी यूज होता है, कौन से टूल्स यूज कर रहे हो इस काम के लिए। यार, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू शुड बी वेरी स्ट्रांग विद, फर्स्टली आपको फिग्मा आपके टिप्स पर होना चाहिए, आपको वायर फ्रेमिंग पता होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली अगर मैं कोई डेवलपर को कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, तो इट्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट में उसे कम बताओ, बट देन उसे विजुअली जितना एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक वायर फ्रेम बना दूंगा कि कि यूजर आया फ्रॉम कार्ट टू वेबसाइट टू देन दी चेकआउट पेज, तो विजुअली बहुत इम्पैक्टफुल होता है डेवलपर के लिए, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ वायर फ्रेमिंग यू कैन ऑलवेज यूज टूल्स लाइक Figma, and then Miro are these are two very good tools. Then analytics के लिए you use these tools like Google Analytics, GA4, right? Wherein Google Analytics is a very what do you call, very strong and compatible tool with any website these days. It is just that कि आपको एक कोड स्निपेट होता है जो गूगल आपको प्रोवाइड कर दो, आपको अपने जो वेबसाइट का जो बैकएंड है
उसमें आपको डाल देना होता है, राइट, एंड रेस्ट यू हैव टू लीव इट ऑन दी गूगल। वो आपको पूरा डिटेल्ड एनालिटिक्स दे देता है कि कितने लोग आए थे, कितने लोग किस पेज पर गए, किस यूआरएल पर गए। देन you should of course be very good with Google Analytics as well. And then you have tools like uh, MoEngage and MoEngage ऐसा टूल है जो आपका रिटेंशन में आपको हेल्प करता है, राइट। रिटेंशन भी, जैसे आप मुझसे केपीआईज पूछ रहे थे, वैसे ही रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है एक प्रोडक्ट मैनेजर का। कि फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क इन अ हेल्थ केयर डोमेन, राइट। तो कित एक यूजर कितनी कंसिस्टेंसी से आप ही से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लोकल फार्मेसी, राइट। तो that's very important. And then MoEngage is a very good analytics tool. It helps with user insights. And of course अगर आपको कोई WhatsApp related campaigns चलाने हैं, राइट, तो आपने देखा होगा कि WhatsApp पे आपको बहुत डेली मैसेजेस आते हैं फ्रॉम ब्रांड्स, right? हम्म। So these all of this is done by MoEngage, and there are other tools as well. So deep analytics and campaigning, all of this is a part of MoEngage. So a very powerful tool as well. तो कोई केपीआई, अगर जैसे रिटेंशन का भी बात किया, अगर रिटेंशन नहीं आ रहे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना प्रोडक्ट मैनेजर का ही काम है, राइट? हाँ, सो बेसिकली आपको हर मतलब टू लुक एट एनी प्रॉब्लम, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप पहले सॉर्टेड हो, राइट। आप एक प्रॉपर फनल बना रहे हो, राइट, एंड आप उस फनल के उस पीस में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उस फनल में कहाँ पे ब्रेकेज है। फिर उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाले को, और उस पार्ट को, उस फनल के पार्ट को आप एनालाइज करते हो, आप डेटा में जाते हो, राइट। हियर कम्स द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट्स एज वेल, और प्रोडक्ट एनालिस्ट्स एज वेल, जो आपको डेटा इंसाइट्स के साथ हेल्प करता है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दोज डेटा इंसाइट्स आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, राइट, एंड उसको सॉल्व करते हो। Okay, so for students who are hearing about this field for the first time, how can someone start a career in product management as a fresher? So, Devagya, I get this question very frequently from people coming from a tech as well as a non-tech background, right? So, as I mentioned, uh, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको टेक प्लस मैनेजमेंट या फिर हाँ, मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में आपको अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन केस यू कम फ्रॉम uh, a tech background, it's fairly easy for you to get a job in a product management role, right? Then मतलब अगर आपने सिर्फ टेक में ही अपनी अंडरग्रेड करी हुई है, राइट, तो इट्स फेयरली इजियर फॉर यू टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बट ऐसा नहीं है कि जो पीपल कमिंग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड दे कैन नॉट गो इनटू व्हाट यू कॉल प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो it's you can you are eligible for a product management role। कुछ की वेज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटर्नशिप करी हो पास्ट में, राइट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फील्ड से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने रिक्रूटर को दिखा सकते हो कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, राइट। आपने कोई सर्टिफिकेशन करी हुई है, राइट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए। सेकंड वे कि आप दिखा सकते हो कि अगेन मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट के विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेरे को नॉलेज है, राइट। एंड थर्ड इज आप कोई भी इंटर रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटियर्स ट्रांजिशन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल हैव यू हर्ड ऑफ दिस एप्लीकेशन कॉल्ड इन शॉर्ट्स? Yes. Right. So, in shorts, it has news, basically news Mm. in 60 words or 60 less, minutes. right? So so a content writer who is working with in shorts, right, can also become a very good product manager, क्योंकि right? उसको So इंसाइट्स पता है उसका। exactly, एग्जैक्टली। exactly. So
So basically, anyone can become a product manager. In a lot of product management interviews, right? They ask you guesstimates. So it's very important. We can cover that section separately. We are getting a lot of requests for that. How to prepare for an interview for product management. Okay. Definitely, definitely. But And all in all, sorry to interrupt you. mhm. All in all, product management is one field, wherein you get an insight of, as I mentioned earlier as well, all the fields in the same department, right? And you not only need technical skills, but you should also be good in art, right? As in, for example, if I have to design a product page, right, how it should look like. So it's a mix of both analytical plus creativity. ट्रू ट्रू दैट. तो उसके आगे फिर कुछ मिथ्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अराउंड हैं, मतलब कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट सुना होगा, और जब एक्चुअल करने में आए तो क्या डिफरेंस लगा? ओके, सो कॉलेज डेज में जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट मैनेजमेंट सुना था, तो मेरे को लगा था कि बहुत सारा कोडिंग करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता, right? Product management is more towards problem solving skills, right? And being focused, right? Because as I mentioned, your day will be, as a product manager, your day will be packed with meetings, right? So it is on you how uh, distribute your time. So yeah, to be a good product manager, you should have good common skills and good. Common skill is not a skill. It comes naturally, but you should have good problem solving skills to become a product manager. तो रिक्वायरमेंट तो आई थिंक सभी फील्ड में है इसका, सारी कंपनीज यस. हैव सो प्रोडक्ट मैनेजर्स. आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स आर क्वाइट बूमिंग, टू बी ऑनेस्ट. I mean, they work on large language models, जिन्हें LLMs भी कहते हैं, right? यस. They are quite in boom, and their demand is very high these days. I see a lot of companies like Meta and Google posting jobs for AI product managers quite oftenly these days. Guys, you can go to the previous video, the episode one where we interviewed with an AI and ML engineer, and drop the questions below if you have any. And final question would be, सैलरी डिस्कस कर लें थोड़ा. So, so as an associate product management, right? I'm not talking about an internship, but as an actual associate product manager, which is a starting step towards product management, you can expect anywhere between 5 lakhs per annum for the lower end of the band, and up to 9 to 12 lakh rupees uh, if I talk about the upper band. But of course, I have seen a lot of folks that those are like BCom and BBA graduates, and then they did their masters from good IIMs or ISBs of the world, right? And they got an associate product manager role, but at a 20-25 lakh rupee package. So it quite varies from what background you have and where you are coming from. So it's a very subjective thing. Again, salary depends on location to location, person to person, and experience to Correct, experience. correct, correct, Right? correct, correct. But then, if I talk about the hierarchy, you first become an associate product manager, then you go up to product manager, then senior product manager, then you go to group product manager, wherein you are managing a bunch of people in the same domain, and then comes the AVP of product management, then VP, then chief product officer is the last. How much And time then, would of it course, you take have as a fresher to reach there without
or MBA with MBA? I Approximate time feel that, frame. yeah, yeah. So I feel that if you do not have an MBA, right, it will take you anywhere between 8 to 10 years to reach that CPO or Chief Product Officer role. But then, if you have an MBA from a good college, right, then you can deduct that time by 4 or 5 years easily. So it's basically it an MBA basically helps you skip the corporate ladder. Okay. So if we have enough questions, and we might find a guest who has an MBA and is a senior product manager in some field someday. So let's hope for that. And that's Thanks. it from my end. Any questions you can drop down in the comments. And thank you, Dash, for taking out time for this session. Thank you so much.